हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 7 ऑफ हॉगवर्ट्स लेगेसी। एंड भाई आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि कल हमने छोड़ा था जहाँ पे हमने उड़ने वाली चीज़ है वो सीखनी थी। एंड चलो स्टार्ट करते हैं भाई, फटाफट से वहीं चलते हैं। और भाई उस चीज़ में मज़ा आ जाएगा क्योंकि अगर अगर हम उसको नॉर्मली भी लेके घूम पाएंगे ना तो भाई ट्रैवलिंग कितनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। वैसे तो अभी भी है क्योंकि बट थोड़ा सा डिस्कवर कर लो तब। गो टू फ्लाइंग क्लास। चलो अपने को फास्ट ट्रैवल का ऑप्शन मिल जाता है तो वो भी बढ़िया ही है। वैसे उम्मीद तो मेरे को यही है कि अभी क्लासेस तो वही लगनी है। भाई ये कहीं पे भी सो जाता है क्या दिन करने के लिए वो भी। Everybody grab a broom and we shall get started. चलो Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. थैंक यू थैंक The यू। goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! क्या बात है। Thank you. Now, your turn. ये बढ़िया था। Up. Up, you stupid ratty school broom! ऐसे बोलेगी तो जरूर हो गया। और तू तो बोल। अच्छा Up. यार हम परफेक्ट है। One leg over, so there's a leg on each side. अच्छा None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. हैरी पॉटर तो असली ये लग रहा है साइड वाला। And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Oh. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned Wish I in had my one own piece. This is brilliant. इसका कंट्रोल और मतलब ये अप एंड डाउन वाला सीखना पड़ेगा बस मुझे थोड़ा। Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. ओह अच्छा स्पीड भी कर पा रहे हैं। नाइस। What a view. Hello. Nice day for a flight. Brilliant. भाई मस्त है यार ये चीज़ है। हाँ ये The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. इससे और तेज नहीं जा सकते हम? क्यों क्या ये? अच्छा कंट्रोल्स है ना ये तो दिखा रहा है। अरे चल नीचे Whoa. चलते हैं। Our aquatic resident likes to make an Oh. appearance once in a while. डायनासोर से बाहर आ गए थे ऐसा लग रहा है। तो ट्यून भी मेरे को तो डायनासोर वाली फील दिला रही है। जुरासिक पार्क की नहीं आती थी। That wasn't too bad. भाई हम परफेक्ट है भाई, क्या बात कर रहा है तू? Oh, well done. थैंक Have a यू। moment. नाइस। I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clockton. So, care to join me for a bit of high-flying fun?
can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. इसकी हवा ज़्यादा खराब हो रही है लग रहा है. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. भाई बच गया मैं. भाई ये पागल है क्या? Nice to get above it all, isn't it? भाई मैं तो आराम से जाऊंगा साले. यार ये पागल है सच्ची. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Oh. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. यार ये And the सच में. owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. सुंदर लग This रहा is है. quite the tour, Everett. अरे. Ooh. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. यार मतलब. Already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. ओ. Dismount here. ओ मैं उतरना भूल गया. अरे ये लास्ट वाले पार्ट को छोड़ के ना ये बताना भाई मैंने कैसे कैसे चलाई है ये. थोड़ी तारीफ कर देना प्लीज. मतलब इतना बुरा नहीं करना. And where have you two been? इसने फंसाया Oh, मैम. hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Sorry. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. जी मैम. Chin up. That was some rather good flying. नाइस. उन्होंने तो तारीफ कर दी. प्लीज आप लोग भी कर देना. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. I have no regrets. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Nice. Quest completed. And हमारा लेवल भाई कितना क्लोज है. 13 क्यों नहीं हुआ. अब वेट कर लेते हैं एक और नई क्वेस्ट आ जाएगी. मैंने खैर उसका लास्ट की वर्डिंग सुनी नहीं थी. मैं कुछ सोच में पड़ गया था अचानक ही. आ गई न्यू क्वेस्ट अवेलेबल. एंड भाई दो आई है. क्या बात है. इन द शेडो ऑफ द अंडरक्राफ्ट. पहले ये कर लेते हैं. ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो लगेगा मुश्किल सा. चलो इसकी तरफ चल के देख लेते हैं. हमारा फास्ट ट्रैवल अगर ऑप्शन मिल जाए तो दैट विल बी सबसे ज़्यादा बेस्ट. और उधर है ना तो मेरे ख्याल यही हमारा नियरेस्ट. कितनी दूर है. ओ हेलो. इधर आ जाओ. अरे इधर से जाना है ना. Can't somebody let me copy their potions homework? Revelio. कुछ तो चमका था यार. And I thought The goblins and the goblins, upright. werewolves, where were you?
पता नहीं क्या था। ओ Leviosa. आ जा भाई, कलेक्ट कर लेते हैं। Revelio. उस तरफ है ना। इसको क्यों ठंड लग रही है? Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. ऐसा तो लग रहा है कुछ सीरियस मैटर है। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. भाई यार ये कुछ नया था, मतलब नया तो पूरा गेम ही है, ये चीज एक अलग है। What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to Revelio. find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is 𝐸𝐻𝐾? He must have sneaked past and gone ahead. 𝐸𝐻𝐾, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you 𝐒𝐿𝐹, the vanishing spell. Oh, You can cast 𝐒𝐿𝐹 to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. yes please. ओ भाई सब बड़ी डिफिकल्ट है ये तो। सच में यार, अब लगा था कि हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। न्यू स्पेल अनलॉक, नाइस। Splendid. Now, cast 𝐒𝐿𝐹 on those chairs. ये रे ना, इसको लगाएंगे हम इसकी जगह, क्योंकि अपने को अभी कोई फाइट वगैरह लेनी नहीं है। Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. ठीक है, अपने पास मूनस्टोन वगैरह तो है यार बीच में, मतलब Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... Goodness. ठीक है। My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate 𝐸𝐻𝐾. Yes, Professor. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. सॉरी। ओ अच्छा, Accio. एक मिनट, डब्बे को लेके जाना है क्या अपने को कहीं? Accio. लग तो मेरे पास ही रहा है। Hope this isn't as precarious as it looks. नहीं, डब्बे को तो नहीं लेके जाना।
Revelio. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. वाह Revelio. ओह How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. एक और डब्बा आ गया What was that? Was that a golden snitch? ओए हाँ ये रहा ना Accio. You should summon your wits and find out. ये मेरे को लग रहा है सिर्फ जाने के लिए और कुछ नहीं है उसको खींच के कर सकते हैं कुछ यहाँ पे नहीं ना ऊपर चढ़ने के लिए मे भी किसी पे हाँ ये देखो इस पे चढ़ तो गए हम मतलब यहाँ से मतलब इस पे तो नहीं अरे चुप कर जाओ भाई तुम Accio. इनको तो यहाँ पे ले आया मैं कोई ना देखते हैं मेरे को लग तो रहा है कि कहीं पे जाने का होगा ये इससे ऊपर तो नहीं चढ़ पाएंगे हम अरे वाह Revelio. I hope that house elf can find us in here. Accio. गिर सकता हूँ क्या मैं नहीं Levioso. ओ Revelio. ओ भाई ये जगह डिस्कवर हो जाएगी गॉब्लिन Yikes! Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. कुछ तो एपिक होने वाला है ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही एपिक लग रहा है ये खराब हो रहा है भाई ये बहुत अच्छा सीन लग रहा है मजाक की बात नहीं है भाई क्या मस्त बना दिया हमने You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah,
And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. अब मेरे को लग रहा है क्योंकि हमें वैसे भी एक ज़रूरत थी इस डेस्क की, आइडेंटिफाई करना था हमने एक क्लॉथ, क्योंकि वहाँ पे लिखा आया था जब मैं उसमें गया था ना इन्वेंट्री में अपनी। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अगर ऑप्शन आए You'll ना अभी। find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. साला दिखाई नहीं रहा यहाँ तो। I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. ओह कि भाई अब काफ़ी स्पेल सीखने लग गए हैं हम बहुत ज़्यादा। Conjuring spell, nice. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjuring spell. Conjuring से मेरे को याद आ गया, Conjuring के ऊपर गेम होता कितना मज़ा नहीं आ जाता। Nothing to identify. इस पे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चलो Revelio. ओ स्पेल का क्या करना है मेरे को? भाई मैंने गलती से टेबल ही गायब कर दिया था मेरा, बताओ। इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं। अरे इतने नहीं लगाने ना भाई। अच्छा अंडू भी कर सकता हूँ। नाइस। उसी कलर का रहने देते जो सा था ये। बस इसको यहीं रख देता हूँ। और अपने को करना है ये चीज़। सारे टेबल लगाने हैं क्या? और अब ये टेबल लगा लेते हैं एक और। ये है ना पॉटिंग टेबल, हद हो गई। मैं भी क्या ही दिमाग लगा रहा हूँ। अच्छा इसमें से कोई सा भी उठा सकता हूँ। साइंटिफिक, बोटेनिका, इलेक्ट्रिक। Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Thank you, Professor. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. भाई सिखाई देते। चलो सही है, रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है हमारी और अपने पे अभी भी मेन क्वेस्ट अवेलेबल है, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट। चलो ठीक है यार। देखो मैंने ये 3 चीज़ें यहाँ पे लगा दी है। आप लोग बता देना अगर चाहते हो तो इसकी कहीं और सेटिंग कर दे कि या तो बिल्कुल साथ साथ रहे
या फिर मतलब कैसा चाहते हो रूम? ये फ़ोटोज़ वगैरह मैं सोच रहा हूँ हटा दूँ, क्योंकि मेरे को फालतू में ज़रूरत चाहिए नहीं ऐसे। खाली रहेगा तो बढ़िया है, अपने को इतना कोई डिज़ाइन डिज़ाइन नहीं चाहिए। एंड स्पीक टू प्रोफेसर वीज़ली। एक कर लेते हैं बात। I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. ठीक You है। can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. चलो, इसने वही बात कर दिया। अब इंटीरियर डेकोरेटिंग मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे वैसे उड़ा ही देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ ना। क्या डेकोरेट करना अपने को तो पता है ना, अपने को सब क्लीन चाहिए। I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? भाई मैं कर चुका हूँ वॉल डेकोरेशन। मैंने वो चीज़ तो लगा दी है, लाइट में भी हो सकता है वो 1/5 तभी दिखा रहा होगा। चलो और लगा के देख लेते हैं अब। वॉल डेकोरेशन के लिए वॉल तो ये रही 5 चीज़ें लगानी ना, फटाफट लगा के कुछ भी ख़त्म कर देंगे। एक ही लगा देंगे हर जगह। चार हो गई ना, इसका लगा देते हैं यहाँ पे। अब फ्लोर डेकोरेशन करनी है अपने को। फ्लोर ये रहा और ये चीज़ें लगा देते हैं वापस। उड़ानी तो है ही मैंने। Good work. Shall we move on? नहीं, अभी पहले मेरे को स्पेल से उड़ाने दो मेरे को वापस वो चीज़। मेरे को ये सब गंद नहीं चाहिए। चलो भाई बढ़िया, ये सब तो उड़ा दिया मैंने। I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. चलो भाई हम नहीं जाना है ना। नाइस। Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. ठीक है जी। ओह चलो ये कंफर्म कर देते हैं क्या ये हो गया। एडजस्ट द साइज ऑफ एन आइटम। ओह सही बताओ। भाई साहब चलो भाई ये वाला तो हमने कर दिया। इसको चेंज द कलर ऑफ एन आइटम, बस ये रह गया। इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं। Nicely done. चलो भाई ये Now चीज़ भी you're हो ready गई। for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. ठीक है भाई, पहले हम मेरे को यार ये चीज़ें उड़ानी है क्योंकि मेरे को ये करना- मैं भूलना नहीं चाहता। ऑल्टर द बालकनी ऑफ द फ्लोर, बालकनी और द फ्लोर ऑफ द रूम। इसको करके देखें। ओह नाइस, यही ठीक है। Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. भाई Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience.
Of course. What sort of overall look most appeals to you? A cool moonlit ambience. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. ओ भाई एकदम सच में ये बहुत अच्छा है। भाई इन्होंने मेरे नाम के तरीके से कितना अच्छा डिजाइन कर दिया यार, ये बहुत एपिक है। Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Perfect Now है you ये। have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. ये क्या हो रहा है? भाई साहब हेलो, डीमन स्लेयर याद आ रहा है मेरे को इससे। An even bigger space. काफी How ज्यादा। did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Incendio! अरे अरे अरे, आग क्यों लगा रहा हूँ मैं? लो भाई, हमने अपनी हमारी स्पेल जब वापस से लगा ली। बट यार मेरे को ये रूम ना सच में बड़ा मस्त लगा। इन्होंने जो लाइटें लगा दी ना, अरे सच में भाई बहुत सुंदर लगती है ऐसी लाइटें। आप लोगों को कैसी लग रही है लाइटें, आप ज़रूर मेरे को बताना यार, क्योंकि मेरे को सही में काफ़ी बढ़िया लग रही है। चलो यार अब चलते हैं यहाँ से। कहाँ चलें? चलो यार यहाँ से बाहर निकलते हैं हम। अरे इतना टाइम F दबा के रखा मैंने। चलो भाई, एक और क्वेस्ट तो है हमारे पास। यहाँ पे कौन सी है ये, इसका क्या नाम है? मैंने नाम तो नहीं देखा, एक मिनट। चलो यार, अपने पे एक और क्वेस्ट तो है, इन द शेडो ऑफ द अंडरक्राफ्ट। ये वाली अब हम कल करेंगे क्योंकि अपना एपिसोड ऑलरेडी लंबा हो चुका है। इस वाले एपिसोड में मतलब काफ़ी इंजॉयमेंट थी। मतलब भी सबसे यार मेरे को ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही था कि हाँ, उड़ने वाले ब्रूम स्टिक से मिल जाए, एक बार वो भी सीख ले। देखते हैं उसका आगे क्या बनता है क्या नहीं अभी। एंड हमारा रूम था भाई, वो हमने यहाँ पे बना लिया है, वो भी बहुत सही था। तो चलो यार, हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। वो अपने पे 16 पोशन है भाई साहब, हेल्थ वाले, और हमने अभी तक मेरे को लगता नहीं चाहिए इसे यूज़ करा है। चलो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। प्लीज़ यार जो भी देख रहा है वो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना कि क्या पार्ट आप लोगों को बढ़िया लग रहा है इस गेम का। और एंड करते हैं। टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखना।